In this chapter we will learn what is the sun and what is the solar system, what constellations are, and how the moon appears to be change its shape every day. Okay, look at the sky at night. What do you see? आप स्काई को देखिए, रात को तो आपको कैसा दिखाई देता है? Look at the sky during the day. How is the sky at night different from the sky at during the day? ठीक है, दिन से जो है रात में स्काई में क्या डिफरेंट है? दिन में हमें सन दिखाई देता है और रात को हमें मून एंड स्टार्स दिखाई देते हैं. Now what is the sun? The sun is the brightest object in the sky. It is a huge ball of hot gases. Sky क्या है? Sky जो है brightest object, सबसे चमकता हुआ एक तारा. ओके, और क्या देता है? ये क्या है? Huge ball of hot gases and it gives us heat and light. हमें क्या देता है? Heat and light. ओके, without heat and light there would be no life on the earth. अगर heat और light नहीं होती तो लाइफ जो अर्थ पे है कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं होती. क्योंकि हमने पढ़ा है प्लांट्स को भी जो है सनलाइट चाहिए, है ना, खाना बनाने के लिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अगर वो खाना नहीं बनाएंगे तो प्लांट्स भी नहीं जी पाएंगे और जो एनिमल्स हैं वो भी डायरेक्टली जो है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड, तो एनिमल्स भी नहीं होंगे, है ना. तो इसी से वो जो प्रोसेस है वो पूरा चलता है. लेकिन अगर सनलाइट ही नहीं होगी अर्थ पे तो देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ. द सन इज अ स्टार. सन क्या है? एक सितारा. सन इज अ स्टार. इट इज अ स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ. और ये ऐसा स्टार है जो कि हमारी अर्थ के बहुत ज्यादा क्लोज है. नाउ द सन्स फैमिली. अभी हम सन की जो फैमिली है उसके बारे में पढ़ेंगे. प्लैनेट इज अ ह्यूज ऑब्जेक्ट दैट गोज अराउंड द स्टार. प्लैनेट क्या है? एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करता है. ठीक है. Planets do not have their own light. The sun has 8 planets that revolve around it. The earth is one of these planets. जो planets होते हैं उनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती. ओके, planets do not have their own light. और जो हमारा अर्थ है वो भी planet है और सबसे क्लोजेस्ट जो है वो हमारा अर्थ है सन के क्लोजेस्ट. ठीक है. The sun has 8 planets that revolve around the sun. ठीक है. और ऐसे ही 8 planets हैं जो कि इंक्लूडिंग आवर अर्थ जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. The sun and its planets belong to the solar system. सन और जो इसके 8 प्लैनेट्स हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम. ठीक है. ये है हमारा सोलर सिस्टम. सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. अभी एक प्लूटो था, उसको अभी हमने 12 प्लैनेट्स में इंक्लूड कर दिया है. ओके, तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो ऐसे है: माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स. ठीक है. इसको जो लर्न करने का तरीका है वो ऐसे है: माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स. ओके. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. टिल द ईयर 2006 9 प्लैनेट्स वर नेम्ड इन द सोलर सिस्टम. ठीक है ना. पहले 2006 से पहले जो है 9 प्लैनेट्स सोलर सिस्टम में काउंट होते थे. इन 2006 इट वाज डिसाइडेड दैट प्लूटो वाज टू स्मॉल टू बी कॉल्ड अ प्लैनेट. फिर ऐसे डिसाइड हुआ कि जो प्लूटो है वो बहुत ही छोटा प्लैनेट है, ड्वार्फ प्लैनेट है, तो उसको हम सोलर सिस्टम में नहीं काउंट कर सकते, प्लैनेट में नहीं काउंट कर सकते. सो इट वाज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्लैनेट्स. द सोलर सिस्टम नाउ हैज 8 प्लैनेट्स. इसीलिए प्लूटो को जो है प्लैनेट्स में से रिमूव कर दिया और अभी सोलर सिस्टम के 8 ही प्लैनेट्स हैं. नाउ स्टार्स. व्हाट आर द स्टार्स? On a clear night, you can see thousands of stars twinkling in the sky. All stars are huge balls of hot gases. हमने पढ़ा the sun is a star. Star क्या होते हैं? Huge ball of hot gases. और clear night में हमें thousands of stars जो है वो sky में दिखाई देते हैं. In the olden days, people used their imagination to connect several stars to form a shape or a pattern in the sky. Olden days में लोग क्या करते थे? Imagination करते थे, कुछ डॉट्स को ज्वाइन करके कुछ पैटर्न को, मतलब कि जो कुछ स्टार्स हैं उनका एक पैटर्न या कुछ ऐसा वो शेप इमेजिन कर लेते थे. These groups of stars forming an imaginary shape or pattern in the sky are called constellations. So what are constellations? These groups of stars forming an imaginary shape. इस कोई स्टार्स की इमेजिनरी शेप या पैटर्न स्काई के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशंस. Constellations have been named after animals or people from ancient myths. Constellations जो है वो किसके नाम पे हुए? People या फिर ancient myth. myth क्या होता है? कि कोई ऐसी स्टोरी that may be real or may not be real. मतलब वो सच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. या तो ancient myths के नाम पे या फिर जो लोगों के नाम थे, peoples के,
उनके लोग मतलब के नाम पे जो है कॉन्स्टलेशंस का नेम पड़ता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल द ग्रेट बेयर, ओरियन, द हंटर, लियो, कैनिस मेजर एंड हर्क्यूलिस आर एग्जांपल्स ऑफ कॉन्स्टलेशन। ये किसकी उन्होंने, ये जो है स्टार्स है, ऐसे उन्होंने डॉट्स कनेक्ट करके इमेजिन किया कि दिस इज द कॉन्स्टलेशन ऑफ ग्रेट बियर। ठीक है, ये क्या है, ओरियन, जैसे कि कोई शिकारी होता है, ठीक है, ये ओरियन, ये स्टार्स है, इनके उन्होंने डॉट्स ऐसे इमेजिन कर ली। और ये क्या है, हर्क्यूलस। ठीक है, द कॉन्स्टलेशंस ऑफ ग्रेट बियर, ओरियन एंड द हर्क्यूलस। नाउ द मून, व्हाट इज द मून? मून क्या है? मून इज अ बॉल ऑफ रॉक दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मून क्या है? एक रॉक, मतलब एक रॉक की बॉल जो कि हमारी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, इट इज आवर नियरेस्ट नेबर इन स्पेस। स्पेस में जो सबसे हमारा नियरेस्ट नेबर, हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी कौन है? मून। और जो हमारी अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन है? मून है। ठीक है, हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था सोशल स्टडीज में कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, लेकिन मून जो है वो हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन एंड इज lit up by the light from the sun। मून की जो है अपनी कोई लाइट नहीं होती, लेकिन वो सन की लाइट से lit होता है। ओके, सन की लाइट से वो चमकता है। When the moon goes around the earth, different parts of it are lit by the sun on different days। जब मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है तो जो है इसके डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स जो है मून के वो अलग अलग ऐसे चमकते हैं। ठीक है, वी कैन ओनली सी द पार्ट दैट इज lit up। हम सिर्फ उतना ही पार्ट दिखता है मून का जितना कि उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है। ठीक है, सो इट लुक्स एज इफ द मून चेंजेस इट्स शेप एवरी डे। तो ऐसा लगता है कि जैसे मून अपनी जो शेप है वो चेंज कर रहा है, बट इट एक्चुअली डज नॉट चेंज। द मून, ये क्या है? मून है। ओके, व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ, द साइड ऑफ द मून फेसिंग अस डज नॉट गेट सनलाइट। जब मून क्या होता है, सन और अर्थ के बीच में रिवॉल्व करता है, तब जो है उसका पार्ट हमारी अर्थ की तरफ जो है वो ब्लैक हो जाता है, तो हमें उस टाइम मून नहीं दिखाई देता। हम उसको क्या बोलते हैं? सो वी कैन नॉट सी द मून बिकॉज इट्स डार्क साइड फेसेस अस, दिस इज द न्यू मून। तो हम उसको क्या बोलते हैं? न्यू मून। न्यू मून क्या होता है? जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है। ओके, व्हेन द मून इज इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ठीक है, तो जो उसका पार्ट फेसिंग अस है तो उस पे लाइट नहीं पड़ रही, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यू मून। After a day or two, we see a small portion of the moon. This is called the crescent moon. फिर एक दिन या 2 दिन के बाद जब उस पर थोड़ी लाइट पड़ती है, तब उसका छोटा सा पार्ट दिखाई देता है और उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्रेसेंट मून। After 7 days, we can see half the moon. और 7 दिनों के बाद हमें कितना दिखता है? हाफ मून दिखाई देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाफ मून। क्या बोलते हैं? हाफ मून। 2 or 3 days later, we can see more than half of the moon. फिर 7 दिन के बाद और उसके 2 और 3 दिन के बाद, मतलब कि 10 या 11 दिन के बाद जो है हमें उसका आधे से हाफ से ज्यादा पोर्शन दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द गिबस मून। ओके, 2 weeks आफ्टर द न्यू मून, द मून इज ऑन द ऑपोजिट साइड। मतलब कि 2 weeks आफ्टर 15 days जो मून है वो ऑपोजिट साइड पे चला जाता है। द साइड फेसिंग अस गेट्स सनलाइट। जो अभी उसकी ऑपोजिट साइड थी वो अभी हमारी तरफ हो गया मून की। ठीक है, वी कैन नाउ सी द फुल मून। अभी हम फुल मून को देख पा सकते हैं। ये है फेजेस ऑफ द मून। तो ये जो होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फेजेस ऑफ द मून। जैसे न्यू मून होता है जबकि अर्थ के और सन के बीच में होता है मून। ठीक है, ये सनलाइट पड़ रही है, तो ये हमारी अर्थ है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ब्लैक हो गया। ठीक है ना, तो उसके बाद जो है ये डे 3 है ना, हमने पढ़ा था डे 1 और डे 2 के बाद जो है हमें थोड़ा सा मून दिखाई देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेसेंट मून। फिर आफ्टर 7 days वी कैन सी द हाफ मून। ओके, फिर आफ्टर 10 days वी कैन सी द गिबस मून, मोर देन हाफ द मून। और डे 14 को हमें कितना मून दिखाई देता है? फुल मून, क्योंकि यहाँ पे जो था वो हमारी अर्थ के पास जो है उसकी सनलाइट पड़ रही है, तो उस टाइम हमें क्या दिखता है? फुल मून। ओके, फिर डे 18 को गिबस मून, क्योंकि वो फिर से रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका मोर देन हाफ ऑफ द जो पोर्शन है वो फिर से डार्क होता है। फिर डे 21 को हाफ मून, देन डे 25 को क्रेसेंट मून। ठीक है, पार्ट ऑफ इट खाली हम दिखाई दे सकते हैं। देन डे 28 को फिर से न्यू मून। ये पूरा जो सर्कल है ऐसे ही चलता रहता है।
रिवॉल्व करता है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जैसे मून अपनी शेप चेंज कर रहा है। इट टेक्स अ मून नियरली 28 डेज टू गो अराउंड द अर्थ। ठीक है, अर्थ का एक चक्कर, एक सर्कल कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगता है मून को? 28 डेज। सो द नंबर ऑफ डेज बिटवीन वन न्यू मून एंड द नेक्स्ट इज 28 डेज। ठीक है, तो वन न्यू मून एंड द नेक्स्ट न्यू मून, मतलब एक न्यू मून से दूसरे न्यू मून में पहुंचने के लिए कितने दिन लगते हैं? 28 डेज। न्यू मून को हम क्या बोलते हैं? अमावस्या। और फुल मून को हम क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। ओके, नाउ यू नो, इससे पहले अभी हम एक वीडियो देख लेते हैं। ओके, नाउ वी विल सी एन एनिमेशन वीडियो। Our solar system consists of a star sun, 8 planets and their satellites. The 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. The Sun is situated in the center of the solar system and is the biggest star of the solar system. It is a huge ball of fire and the main source of energy in the solar system. All the planets revolve around the Sun in their respective paths known as orbit. The Sun is not the only star. Other than that, there are millions of stars which appear as twinkling pinpoint lights in the night sky. One of them is the Alpha Centauri, which is the closest star to our Sun and is around 4 light years far from it. Besides this, some stars, when seen from the Earth, seem to form a recognizable pattern in the night sky. Such groupings of brighter visible stars in the night sky are known as constellations. Some of the major constellations are Ursa Major, Scorpio, Orion, Leo, etc. Signs: Moon and shadow. On a crisp night, sitting among the stars and the clouds, the moon thought, I love to shine my silvery light on earth. But do the people of earth know where I come from or how I was born? "Come, let us know some interesting facts about the moon." The moon is Earth's only known natural satellite and the 5th largest satellite in the solar system. It is also one of the brightest objects we see in the sky after the sun. The moon is a non-luminous body, which means it has no light of its own. The moon shines because it reflects the light of the sun that falls on it through the earth. The moon is about 3,84,400 kilometers away from Earth. It is also smaller than the Earth and the Sun. This means that, have you ever heard about a satellite? A satellite is an object which revolves around a planet. It can be natural or man-made. And we know that the moon naturally revolves around the Earth, thus, the moon is the only natural satellite of the Earth. Food for thought. The American spacecraft Apollo 11 was the first spacecraft which landed on the moon on
20th of July 1969, carrying the first men to the moon. On July 16, 1969, a spacecraft, Apollo 11, took off from the Kennedy Space Center in Florida, USA. Astronauts Neil Armstrong, Michael Collins, and Edwin Aldrin traveled in this spacecraft. Armstrong was the first to step out and set his left boot on the surface of the moon. About 20 minutes later, Aldrin joined Armstrong on the moon's surface. There, they stayed for 2.5 hours and collected rock samples, which they carried to the Earth for further scientific investigation. Food for thought. The dusty footprints of astronauts which are imprinted on the surface of the moon will remain visible for another 10 million years at least. Because the moon has no atmosphere or no wind, hence it has almost no erosion. Who is an astronaut? An astronaut is a person who travels to space in a spacecraft. The famous astronaut Edwin Aldrin is also known as Buzz Aldrin. Do you know there is no oxygen on the moon? And as a result, astronauts going to the moon have to carry their own oxygen cylinders. Choose the correct answer. Which of the following is an object that revolves around a planet? Satellite, meteor, or the sun? Click to know the right answer. Chandrayaan-1 was India's first unmanned or without man spacecraft, which was launched by the Indian Space Research Organisation (ISRO) on 22nd of October 2008 to the moon. This mission was announced in 2003 with an aim to map the moon's surface, to get more information about the moon and to identify the presence of water on it. The Indian spacecraft Chandrayaan-1 was launched from Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, Andhra Pradesh. Which is India's first unnamed space mission to the moon? Chandrayaan-11, Apollo 11, or Chandrayaan-1? Click to know the right answer. The moon is the brightest and the most beautiful object in the night sky, but we do not see its similar shape every day. These changing shapes of the moon are called phases of the moon. The moon is the natural satellite of the Earth and revolves around it. The moon shines because its surface reflects light from the sun. When the moon is between the Earth and the sun, we cannot see the moon at all because the side of the moon facing the Earth does not get sunlight. This is called the new moon phase. Gradually, the moon moves away from the sun. As a result, after 2 to 3 days, we can see some part of the moon. This phase is called the waxing crescent as the illuminated part of the moon expands. About after a week, the moon moves further. We can now see half of the moon. This phase is called first quarter phase. 2 or 3 days after the first quarter, more than half of the moon is visible. This phase is called the waxing gibbous. The moon moves further and reaches a point in its orbit where the Earth is in between it and the sun. At this time, full side of the moon facing the Earth gets the sunlight. This is a full moon day. Now, the moon gradually moves towards the sun in its orbit. In the next phase, shape of the moon is less than the full moon and it is called the waning gibbous because the size is now decreasing. The next phase is the last quarter phase. Here, the moon appears exactly half illuminated in our sky.
After a few days, the illuminated portion decreases further. This is the waning crescent phase. Then, after a few days, the moon again comes back to the new moon phase. This complete cycle takes 29 days approximately. Recap. The moon is Earth's closest neighbor in space. The moon is the only natural satellite of the Earth. The surface of the moon is covered with lava plains, mountains, and huge craters. There is no atmosphere on the moon. Different shapes of the moon, as seen from Earth, are called phases of the moon. Artificial satellites are very useful to man. Satellites can be divided into 6 principal types: research, weather, communication, navigational, earth observing, and military. I think you all understood the concept of the sun, moon and stars from the video. Now you know the sun is the star nearest to the earth. Sun क्या है? एक स्टार है जो हमारी अर्थ के बहुत नजदीक है. The earth and the other planets revolve around the sun. जो अर्थ है और अदर planets है वो हमारी जो sun है उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं. The sun and its 8 planets belong to the solar system. और solar system क्या है? जो अर्थ है और बाकी के planets हैं वो मिलके solar system बनाते हैं. An imaginary shape or pattern in the sky formed by a group of stars is known as constellation. The moon is a ball of rock that revolves around the earth. The moon has no light of its own. It shines when sunlight falls on it. Moon की अपनी कोई लाइट नहीं होती, वो तब शाइन करता है जब उस पे सनलाइट पड़ती है. We can only see the portion of the moon that receives sunlight. हम सिर्फ मून का उतना ही पोर्शन देख सकते हैं जितने पे सनलाइट पड़ती है. This is why the moon appears to change its shape every day. इसलिए हमको ऐसा लगता है कि मून अपनी जो है शेप चेंज कर रहा है, but it actually not changes its shape. Okay, this is all about the chapter. So thank you.